এটা কোন দিকে আছে স্যার? rotate device back. Orientation log. Rotate device back. এটা করছি সে স্টার্ট হউ এবে কি আসি নাই তো এটা ও স্যার সেই ইয়ে করলা স্যার সে লাইভ ভিডিও সমান হব না স্যার এমতি দেখবে মোবাইলরে এমতি করে দেখবে সেটা পাই এমতি রাখা হব এটা সেমতি হবনি নাকি ঠিক আছে স্যার হলাম তো নাই ଆଉ ଥରେ ଯିବା ବହୁତ ଲାଇଭ୍ ନାଇଁ ସାର୍ ସେ ପିଲାମାନେ ଆଇଲେ ସାର୍ ଆଇଲେଣି ଏବେ କ୍ଲିୟର ଆସିଲା ନାଇଁ କ୍ଲିୟର ଆସିଲା ସାର୍ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ଆସିବ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ଗଲେ ଆସିବ ସାମ୍ନାରେ ଗଲେ ଆସିବ Good evening, students. We are discussing about your important, very important chapter, human reproduction. এই human reproduction सबठारु important long question तमरा male reproductive system. এই male reproductive system previous video रे हमें किसी आगे देथिले सेही किसी आगे गला परे हमें आज जो क्लास रखिबा अगर जस्ट हम टिके इंट्रोडक्शन करथिले एथरा पढेबा टेस्टिस. Today we are discussing about testis. Which is present inside the scrotal sac. Testis is present inside the scrotal sac. You know about the testis. A pair of testis is present inside the sac-like structure, that is the scrotum, which is suspended below the abdominal cavity. We know about the scrotum, that means it is a sac-like structure and it is a loose pouch, skin, muscle and connective tissue. It is a type of sac-like structure of loose pouch of skin, muscle and connective tissue. Inside the scrotal sac, a pair of testes is present. We know about the testis. It is a male reproductive gland, or it is also known as gonad in animal, including human also. जदि आम देखा टेस्टिस लेंथ केते ब्रेथ केते एटा आम रेकॉर्डिकली में जानिबो जे एटा कि we have to remember the length. It is measure about 4.5 centimeter in length, 2 to 3 centimeter in wide, 2 to 2.5 centimeter thick, 10 to 15 gram in weight, and the volume, that is near about 15 to 20 ml. ये दिला हमें तार लेंथ ब्रेथ विषय हमें मन रखियो पड़िबो. लेंथ टा लागछि near about 4.5 centimeter, near about 4.5 centimeter.
breadth, it is 2 to 3 centimeter wide, 2 to 3 centimeter to 2 to 3 centimeter in width, wide चौड़ा, 2 to 2.5 centimeter thickness एवढी कथा. Next important point, that is what is vernacular. You know about vernacular? Vernacular देखो ये testis ये scrotal sac एठी connecting link आने जदि कहबा एटा लगे कोन कहबा connecting link between testis and scrotal sac. जदि हमें तक कहबा जदि हमें परीक्षा लिखला बेले खाली टाइम में लिखियो the gubernaculum testis is a coital retropotential mesenchymal cord that extends between the caudal pole of the coital testis and the scrotum. बुझियोछि gubernaculum testis is a coital retroperitoneal mesenchymal cord that extends between the caudal pole of the coital testis and the scrotum. Okay. Next ଆମର ଗୋଟେ important point କଥା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ discussion କରିଛନ୍ତି, that is inguinal canal. What is inguinal canal? testis ଟି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବ ତା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ testis ଟା scrotal sac ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ନା in the embryo the testis develops within the abdominal cavity. Testis in that condition हमें यदि embryonic stage कथा चिंता करिबा, in the embryo the testis develops within the abdominal cavity. Testis develop within the abdominal cavity, but the time by the time of delivery the time the baby is born, the testis moves out of the abdominal cavity and it will descend out to the scrotum through the inguinal canal. एक कथा हम बुझी करू जे हमर inguinal canal देके अरे कोन हला through inguinal canal the testis is descend down to the scrotal sac. अगर बुझ पालो the testis is descend down from the abdominal cavity to the scrotal sac through inguinal canal. Sometime कौन हुए मने रखिबा, sometime कौन हबो it fails to descend down, that means बेले बेले sometime कौन हबो testis टा जेते बेले पिलाटी डेलीवरी हिसाब ना ता डेलीवरी testis बेले बेले कौन हबो scrotal sac पास रही abdominal cavity. That means it fails to
descend down. It fails to descend down to the scrotal sac. To the scrotal sac. Then what will happen? The testis will be at that abdominal cavity. That type of disorder is known as cryptocidism. Cryptocidism. One way that sometimes, occasionally, they fail to descend down and remain in the abdominal cavity. Remain in the abdominal cavity. And remain in the abdominal cavity, and that type of condition is known as cryptocidism. Clear? এই কথাগুলো যে ইম্পর্টেন্ট কথা পরীক্ষারে শর্ট টাইপ কোশ্চেন বিভিন্ন এন্ট্রান্স এক্সামরে বা আমার এই কোচিং রিলেটেড কোশ্চেন ভিতরে ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି cryptocidism is an important question. नेक्स्ट आमे इम्पोर्टेंट कथा यदि आमे जीवा टेम्परेचर कथा यदि देखिबा वी नो इट रेगुलेट्स द स्क्रोटम रो कथा कहबा यदि स्क्रोटम का इट इज ए सेल लाइक स्ट्रक्चर दे हैव द एबिलिटी टू रेगुलेट द टेम्परेचर. कौन एटा आमे यदि तमे डिस्कशन करबा द स्क्रोटम इट इज ए स्क्रोटम act as a thermoregulator. It act as a thermoregulator. That means it regulates the temperature. Body ro temperature को regulate करि परिबो. कौन करूची जानि था it maintain the testes at a temperature of 2 degree lower than the body temperature. 2 degree lower than the body temperature. Clear? बुझे ना? ताले कौन होची? At that condition, हमें जानू चाहिए it maintain the testes at a temperature of 2 degree centigrade. At a temperature of 2 degree centigrade, lower than the body temperature. This lower temperature is required for a normal sperm production. For the normal sperm. Understand? बुझियो जी क्लियर? कौन? आम बॉडी रो टेम्परेचर 2 डिग्री लो रहिबो स्क्रोटल सैक भितर टेम्परेचर आ हमें एटा लगे भल कथा जे टेम्परेचर टा जदि कम रहिला स्पर्म रो लाइफ स्पैन का स्पर्म का प्रोडक्शन रे असुविधा होना ताले स्क्रोटम हेल्प कला काई it have the ability of the action of thermoregulator. Next हमरो जदि आमे अल्ट्रा स्ट्रक्चर को दिबा देखबा माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस. नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमें दिबा microscopy
ये है टेस्टिस ता कवरिंग विषय फर्स्ट आमे देखिबा द टेस्टिस इज सराउंडेड बाय थ्री प्रोटेक्टिव कवरिंग इट इज सराउंडेड बाय थ्री प्रोटेक्टिव सराउंडिंग ताले आमे देखिबा तार नाम लागो ट्यूनिका वैजिनालिस ट्यूनिका अल्बुगिनिया बा अल्बुजिनिया ट्यूनिका भास्कुलस ताले कवरिंग रो नाम लागो आउथरे कहबा ट्यूनिका वैजिनालिस ट्यूनिका अल्बुजिनिया ट्यूनिका भास्कुलस तले फर्स्ट हमें कौन क्वेश्चन की ट्यूनिका वैजिनालिस इट इज द outermost protective serous coat of each testis. It is the outermost covering. The middle layer, that is tunica albuginea, middle layer made up of by fibrous or collagenous connective tissue. Then innermost layer, the innermost layer is tunica vasculosa. What is that? Tunica vasculosa. It is the innermost layer. That innermost layer is known as tunica vasculosa. ताले ये थिला कवरिंग रे आउ थरे कहि दबा कोन बुझले ने तिनिटी लेयर रहिला प्रोटेक्टिव कवरिंग रहिला फर्स्ट that is outermost covering, that is tunica vaginalis, middle layer that is tunica albuginea, and middle layer पर inner layer ता होची tunica vasculosa. ये थिला तिनटा को कवरिंग. नेक्स्ट आमे देखिबा तार माइक्रोस्कोपिक व्यू रे कोन होची ये लागै टेस्टिस भीतर आमे स्ट्रक्चर गुडा ये देखिबा these are the chambers inside the testis mostly near about 250 numbers of septa or chambers are there. Jodi hame कहबा कोन each testis has about 250 conical compartments are there, are called as testicular lobules. That is also हमें मध्य वर्तन septa माने भाग, that is the compartment माने chambers. तले यार किधर कितना चैम्बर होची नियर अबाउट 250 chambers are there, near about 250 chambers or that are the compartments. 250 compartments are there. 250 compartments, and inside that हमें आउरी केते कथा जानिबा से कंपार्टमेंट गुडा कर भीतर कोन रहउची सरू ट्यूबला सूता भलिया seminiferous tubes कोन अछि that are the seminiferous tubes. What are they? They are called as also kana kon de seminiferous tubes. Each testicular lobules contains 1 to 3 highly coiled sperm producing testicular lobules contains 1 to 3 highly coiled coil नहीं coil
testicular lobule कौन रहिला highly coiled sperm producing seminiferous tubes कामने कौन that seminiferous tube is responsible for production of the sperm inside the testes sperm which produce in the septa or in that compartment inside that compartment seminiferous tubules are there and a seminiferous tubule bhitare कौन होती है sperm so it is named as sperm producing seminiferous tube जोटा कि एडजेक्टिव लाइक sperm producing seminiferous tube हालांकि पूरा मेंटेन कर देला से जणे दउछे कि इट इज रेस्पोंसिबल फॉर sperm production तले एथि भीतर कोन रहउछि सेल्स रहउछन्ती दैट ए बढ़िया हमर जोटा कि इंपोर्टेंट टर्म यार भीतर जो प्रकार एपिथेलियल टिश्यू गुडा रहला जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू लेयर रहउछि The seminiferous tubule is internally lined by a single layer of germinal epithelial cells. Tale, which is responsible for sperm? The germinal epithelial germ cells are there. Tale, हमें 10th class रे मध्ये जानि छथि जे सेल ए सेल नंबर ऑफ 2n नंबर ऑफ having 2n number of chromosome primordial germ cells हमें टर्म कोन कहउछन्ती primordial germ cells that are the germ cells spermatogonial cells कोन कहउछन्ती that are the spermatogonial cells जेतबे स्पर्मेटोगोनियल सेल टा कोन हबो माइटोटिक सेल डिवीजन हबो ताले कोन हबो 2n नंबर एठी मध्य 2n नंबर ये को डिवीजन है ना माइटोटिक सेल डिवीजन ये सेल का तीन प्रकार सेल primordial germ cells और spermatogonial cells reproductive system रो हमें जानि छथि the process of formation of sperm is known as spermatogenesis what is that term spermatogenesis what is spermatogenesis the process of formation of sperm is known as spermatogenesis তাহলে কোন হবে এই যে সেল ভিতর আছে এই সেলগুলোর না কোন আমরা বলছি spermatogonial cells spermatogonial তাহলে यार ভিতরে রହୁଛି কা ভিতরে রହୁଛି germinal epithelial cell ভিতরে রହୁଛି most of the cells multiplied by mitotic cell division and finally grow up into then it will finally grow up into ये second phase रे ये सब এই যে স্টেজ रो ना मल्टीप्लिकेशन स्टेज ए मल्टीप्लिकेशन स्टेज रे कोन हो मल्टीप्लाइड हे जो ए मल्टीप्लाइड हे हमर फ्रॉम द प्रिमोडियल जर्म सेल और स्पर्मेटोगोनियल सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया सेल रु कोन हला मल्टीप्लाइड हे गला देन कोन हो देन तार ग्रोथ फेज आसो फास्ट आसला एठी हमर आसला
multiplication phase, here is the multiplication phase, then growth phase, ये साइकिल ग्रोथ होची प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऐसे का कोथरे पण कहो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के कर्म कहला करे ये फिर इनला ग्रोथ फेज मल्टीप्लिकेशन फेज ग्रोथ फेज देन मैचुरेशन फेज में हो इक्वल नंबर ऑफ ये हाफर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल ना कोना हो n number of chromosome yenda anala n number of chromosome meiotic cell division ei meiotic cell division hela पुनर्वार फेर करे meiotic cell division ର phase 2 ये मध्य पढ़ावा फिर आउ के से एमएन रहइलो एटा ଗୋଟେ mitotic cell division मैचुरेशन फेज रे एई कथा गुडा आमे स्कीम रखिबा परीक्षा रे लिखला बेले काहे कि ना एटा आउ रे क्वेश्चन परवर्ती स्टेज रे हमें पढ़ाइबा जे द प्रोसेस इज नोन एज spermatogenesis the process of formation of sperm is known as spermatogenesis किंतु आमे ए कथाटा के कहबा काहे कि ना जर्मिनल एठी हमें कोला माने बुझिबो काहे कि एटा परवर्ती चैप्टर रो पाठ परवर्ती टॉपिक ता कि एठी निजर के जल्दी हमें एटा बुझेबा ये ग्रोथ फेज देन मैचुरेशन फेज रे ये एन नंबर आई थी एई कोन हो स्पर्मेटिड फॉर्मेशन स्पर्मेटिड तापरे हमें नेक्स्ट टॉपिक कथा दिबा वर्तमान पई मैच्योर स्पर्म तापरे फॉर्मेशन हला तले कोन हला द एट द टाइम ऑफ meiosis हे गला इट प्रोड्यूसिंग haploid cells that are the spermatids which later converted into spermatozoa or sperm will later converted into spermatozoa or sperm एगुडा का हम के डिस्क्राइब करके लिखिबा परीक्षा रे ताले हम जानि परले दैट प्रोसेस इज नोन एज spermatogenesis next हमें another type of cell विषय रे जिबा which are present inside the testis यार भीतर हमें देखिए टेस्टिस भीतर सेप्टम होइला बा कंपार्टमेंट रहिछि केते कंपार्टमेंट रहला 250 compartments are there you have to remember it because it is a very much subtle question or very much बहुत important entrance exam में 250 numbers of compartments are there and हमें किसी बार सेप्टम मध्य कोजन सेप्टम माने भाग मध्य एटा को कोन कोजंदी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंपार्टमेंट गुडा को कोजंदी हला काले यार भीतर लाइंड बाय ए सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल epithelium inside the seminiferous tubule the seminiferous tubule is lined by germinal epithelial tissue ताले ये थिला हमरो माइक्रोस्कोपिक व्यू रो गोटे कथा किंतु आमे जदी नेक्स्ट देखला आउ गोटे प्रकार अनदर स्पेशल काइंड ऑफ सेल रही सटोली सेल्स ये नेक्स्ट वीडियो रे हमें ये करबा आज
आमे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस रो बड़ अंश के पढ़िले आउ पढ़िले टेस्टिस रो स्ट्रक्चर विषय टिके पढ़िले स्क्रोटम रो विषय पढ़िले टिके इंग्यूनल कैनाल विषय पढ़िले हार्निया विषय टिके जानले हाँ आउ गोटे कथा रही जाइए स्क्रोटम रे कहला बेले आउ गोटे इम्पोर्टेंट जिनस रही हार्निया इंग्यूनल हार्निया जदि कौन हुए बेले बेले टेस्टिस sometimes testis is not descend down ताले एटा को कोन कहउछन क्रिप्टोसाइट्स किंतु बेले बेले कोन हला sometimes it will reopen inguinal canal reopen कौन हुए sometimes inguinal canal fail to close after the testes have descend down or reopen. That type of abnormality is called as inguinal hernia. ये मोर हमर आज टॉपिक टेस्टिस आउ स्क्रोटल सैक विषय आउ नेक्स्ट वीडियो रे सर्टोली सेल विषय then epididymis विषय टिके डिस्कशन हबो then रेडी टेस्टिस ए जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस विषय आ अल्प किछ बाकी रहि जाई छी एपिडिडाइमिस फास्ट डिफरेंस एक टिको लॉन्ग टाइम रो ए अंश गुडा हम डिस्कशन करबा थैंक यू ऑल वीडियो केमति लागला पिलाने कमेंट्स माध्यम रे जणा आउ परवर्ती वीडियो को नेक्स्ट डे रे धन्यवाद।